peace radiate around myself. I am peaceful. Stay in this peace experience for a while. शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो।
Om Shanti. I hope this was a good experience. How many of you could at least feel silence and concentrated and connected at least for a moment? How many of you? Wow, give a big hands to yourself. Congratulations. You know, you're the beginner and you can do even for a moment that experience you can have. So just think if you can experience every day, you practice every day, how much good experiences we can have. So thank you, sister. And now it's time to learn how to think right. I would like to invite our brother, BK EV Girish Bhai. So Girish Bhai is here, so we all welcome Girish Bhai. We learned this in Brahma Kumaris, how to think. You know, even meditation is what? Meditation is a training of thinking, how to think right. And whatever unnecessary waste, extra, negative, whatever extra we have, we can delete or we can keep it aside and we can continue with right thoughts so that we will learn today. Let me introduce Brother E.V. Girish, a component management professional and a trainer with over 10 years of experience in imparting behavioral training programs for corporates, corporate houses, educational and social institutions. International transformational speaker and success coach, well known for his unique style and ability to inspire people. Internationally certified administrator of Thomas PPA HJA, that is, Personal Profile Analysis, provides behavioral assessment of an individual and human job analysis, provides a behavioral benchmark for a job role. Result-oriented trainer and educator with demonstrated ability to function effectively in an adverse environment as well as train with diverse learning styles. He is practicing meditation from many years from his very young age, and also not only practicing but whatever he practices, learns. He is very good trainer and very good educator into imparting this knowledge and experiences into others. And he is a corporate trainer and coach in many other corporates, like his clients are like ISRO, TAPS like this Tarapur Atomic Power Station, and NABARD, Indian Army, Delta Printing Dubai, Reliance Industries and Reliance Communications, Larsen and Toubro, National Stock Exchange, Tata Motors, and Workhard Hospital, Hinduja Hospital, and many more. And Girish Bhai is based in Mumbai, and he has specially come to Abu for this conference. So once again, welcome, brother. I request sisters to welcome our brother with badges and flowers. आपको फ्लावर के साथ एक और स्पेशल फ्लावर मिला है. Have you seen this? Something secret. So let's reveal the secret. Can we have 1 minute of silence? And reflect back whether I'm a right thinker. Most of the time, sometimes, seldom. What is the cause?
I know I should think right, but at times my mind doesn't listen to me. It doesn't obey my order. Today, we will all sit together and introspect. What's the science behind right thinking? What are the causes which creates distortions in my mind and the solutions thereof? What should I do to be a right thinker? Relax. Come back. ओम शांति. थोड़ा मुस्कुराकर बोलिए. मुस्कुराकर. थोड़ा दिल से प्यार से कहिए. अच्छा, प्यार ऐसा होता है. वाह, आई कुड सी द डिफरेंस. थोड़ा उमंग, उत्साह, जोश से कहिए. फैंटास्टिक. नमस्ते. नमस्ते कंप्लीट होना है तो हाथ जोड़ना पड़ेगा. या क्योंकि शायद इंडियन. या सिस्टर. Excuse me. Just one announcement for translation. Anyone need translation? Hindi to English, English to Hindi? Anything? If you need, this is a translation room and sisters translating. If it is going on in Hindi, so it will be English, and if your speaker is in English, so it will be in Hindi, and the frequency is 107. 107. Thank you, brother. Yeah. So, I mean, since sister was speaking about translation, I can speak with you in hardcore, polished British English. I may use certain words from the English dictionary, not necessarily, but could be a possibility that, I mean, we may not understand what is being said. Option 2, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में भी वार्तालाप कर सकता हूँ. हिंदी की शब्दावली ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जिसे समझने में आपको काफ़ी पुरुषार्थ ब्रैकेट में एफर्ट करना पड़ सकता है. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 3, हिंदी इंग्लिश मिक्स. क्या बात है. ये आपका थर्ड ऑप्शन सुन करके दिल को बड़ा तकलीफ हुआ. पता है क्यों? क्योंकि शुद्धता का जमाना नहीं है, सबको मिक्स ही पसंद है. ठीक है. आजकल तो सोच को भी मिक्स कर दिया है, कल्चर को भी मिक्स कर दिया है, पहनावा को भी मिक्स कर दिया है. आई मीन, आपको और मुझे एक दूसरे को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज नॉट अ लिटरेरी फेस्ट wherein we maintain the sanctity and purity of a language. So namaste kiya sabne? Yeah, wonderful. Good morning. Is your morning good? Why is your morning good? Because I am there. My God, मतलब IT वाले इतने अच्छी तरह पब्लिक में झूठ भी बोल सकते हैं. I mean, I'll have to learn it from you. I missed that. I mean, she was trying to make me feel better, ठीक है ना, by saying that because of your presence, my morning is good. Any better answer? Why is your morning good? Pardon? Morning meditation. भाई साहब, बैंगलोर में जाके हर दिन कर. सॉरी, वेयर आर यू फ्रॉम? ओह माय गॉड. मेरे को ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इसीलिए आई कैन कैच वाइब्रेशंस. आई हैव नो आइडिया विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर फ्रॉम, बट बैंगलोर में जाके हर दिन करना, लेट नाइट ऑफिस करने के बाद भी दूसरे दिन सुबह उठ के करना, तब पता चलेगा कि मॉर्निंग गुड है या नहीं है. व्हाई इज योर मॉर्निंग गुड? प्लीज रेज योर हैंड. आई नीड टू सी. Because it is relaxing, sister. Environment is good. Oh my God, I was waiting for that answer. And let me add something extra free. ठीक है ना? खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, नाश्ता नहीं बनाना पड़ रहा है, इनको नहीं उठाना पड़ रहा है, नहीं तो इनका चालू रखो, घर को संभालो, फिर खुद को संभालो, फिर ऑफिस का लॉग इन करो. कितना प्रॉब्लम था. यहाँ एकदम नो वर्क, नो खाना बनाना. That could be one of the reasons. Yes? और husbands के लिए why is the morning good?
अच्छा, नो ऑफिस. दिस इज इंटरेस्टिंग. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑनेस्ट आंसर्स. पद्मा सिस्टर वाज मेंशनिंग यू गॉट दिस रोजेस, राइट? या, और इसके पीछे एक बहुत सुंदर ब्लेसिंग है, करेक्ट? मैं अपना ब्लेसिंग आपको पढ़ के सुनाता हूँ. एंड आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड बिकॉज अब आए हैं गिरीश भाई, ठीक है ना? अभी तक तो कोई दूसरे थे. जब तक नेम प्लेट नहीं होगा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? ठीक है, अच्छा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था किसी और का नाम लिखा हुआ है. ठीक. So that's interesting. So my thought, what I got from the Almighty is so matching today's topic, and I was little surprised when I read it. वरदान है मेरे लिए है, आपको कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति आती है. That is, God is giving me a blessing that Girish bhai, oh fantastic, that I have the ability to put a full stop to my thoughts and also give it the right direction if for some reason it is moving in the other direction. And I don't know how God came to know. Maybe उन्होंने भी वहाँ पर नीचे वाले उसमें अपना स्कैन कर लिया होगा, एजेंडा पता चल गया होगा भगवान को कि राइट थिंकिंग का क्लास है, एंड maybe sisters gave me that. Friends, if I want it to be a dialogue, I don't want it to be a monologue. Yeah, monologue is I sit here and speak, and you sit there and sleep. That is monologue. ठीक है? और मुझे तो इंडियन ऑडियंस इतनी अच्छी लगती है. आई मीन, विदेशों के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट इंडियन ऑडियंस, दे आर सुपर, दे आर फैंटास्टिक, दे आर मैग्निफिसेंट, दे आर आई मीन आउट ऑफ द वर्ल्ड. यू नो व्हाई? बिकॉज इंडियन ऑडियंस के सामने मेरे जैसे ओरेटर्स, स्पीकर्स, भाषण करने वाले, बेटर देन मी ऑल्सो, हम लोगों को आपको देखकर, इंडियन ऑडियंस को देख के समझ में ही नहीं आता है कि भारत की जनता सो रही है कि सुन रही है, क्योंकि भारत के लोग आंखें खोल के भी सो सकते हैं. दे हैव गॉट दैट स्पेशल नैक, एंड दे कैन, कोई ताली भी बजा रहा है, ठीक है ना? दैट इज नॉट डन. ठीक है? आई मीन, पीपल हैव बिकम सो स्मार्ट, दे कैन कीप देयर आईज ओपन, माउथ ओपन, कीप नॉडिंग देयर हेड, बट दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. ठीक है? सो आई वांट इट टू बी अ डायलॉग, राइट? And you can abruptly stop me. I will not mind. ठीक है ना? मुझे बुरा नहीं लगेगा. आपको कोई बात ठीक नहीं लगती है, आपको अपना आइडिया सजेस्ट करना है, you want to comment on certain thing, please feel free. There is no Q&A at the end of the session. The Q&A starts now, because I want you to right now itself start thinking in the right direction. So I'm just a facilitator guiding this particular discussion with an objective in mind. Your participation will evolve the discussion. ठीक है ना? I have my set of ideas, what I've prepared. I'll definitely communicate it with you, but your presence, your interaction will make it more meaningful, and maybe spontaneously I can come up with something better also. Would that be fine? Oh, fantastic. आप लोग बातें करेंगे? बहुत अच्छा. अगर मैं आपसे पूछूं, राइट थिंकिंग, हम लोग हमेशा राइट थॉट क्रिएट करते हैं? अच्छा, जो लोग राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन द राइट थिंकिंग कैटेगरी, प्लीज रेज योर हैंड. इतने डर डर के हाथ ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने हाथ ऊपर उठा दिया, वाइफ बोली तुम और राइट थिंकर, कितना झूठ बोलते हो. आई मीन, आई डोंट वांट टू रिवील, एटलीस्ट इन पब्लिक, दैट ओके फाइन, बट आई रियली अप्रिशिएट दोज हु रेज द हैंड. आई रियली एडमायर योर गट्स. ठीक है? नंबर 2, जो लोग 50% से कम, मतलब most of the time I'm not able to think right, it is the quantity is less, कम हम right think करते हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं. और इसमें सबसे ज्यादा खुशी हमको होती है, क्योंकि बाजू वाला भी वैसी कैटेगरी का है. ठीक है ना? आई मीन, दैट इज अ सैडिस्टिक मेंटालिटी, एंड आई विल कम टू दैट ऑल्सो. थर्ड एंड द फाइनल क्वेश्चन, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है, कृपया करके बताइए आप कौन से कैटेगरी में हैं. ठीक है? हाँ, कौन सा कैटेगरी? प्लीज मैम, विच कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी? पार्डन? अच्छा, मोर देन 50, लेस देन 75. फैंटास्टिक. आई फॉरगॉट दैट यू आर फ्रॉम द IT फील्ड. ठीक है ना? यू बिलीव इन ऑप्शंस, राइट?
एंड हमको स्ट्रेस इस बात का है कि तुमने मेरे मर्जी का और मेरे कन्वीनियंस का ऑप्शन नहीं रखा है, ठीक है ना? दैट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज ओके. सो राइट थिंकिंग क्या है? कैन यू गेस व्हाट कुड बी राइट थिंकिंग? There could be many dimensions to this word. I want to see your understanding of this word. What is right thinking? Right thinking is positive thinking. Right thinking is positive thinking. Okay, what else? Please raise your hand. Plus, sir. Oh, this is interesting. I mean, he's more concerned about somebody else, right? उनके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा है, तब जा करके वो right thinking है. Okay. सर, मैं भी मारना चाहता हूं और खुद मरना चाहता हूं. I am a suicide bomber. And I think that's how the world will become good. Please be loud. Everything happens something for good, but what are you thinking? That's what my question. हो तो रहा है वो आपके कंट्रोल में है, beyond कंट्रोल है, but what's your thinking? मैं ही एक हूं जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल में इतना कम मिला. उस समय ना अपने आप को बोलना, गिरीश सर ने कहा था जो भी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, एंड आई एम कंप्लीटली convinced with it. Anybody else? Yeah, brother. A bit louder. Oh, fantastic. It brings me joy and no guilt. Sister, last answer. Okay. Our personal motivation and intent is not risking someone else's. Okay. So it's not impacting in an adverse way somebody else. Sir, please. आप बताइए, sir. Yeah. Oh, fantastic. It is good for everybody. All stakeholders benefits out of it by creating that particular thought. So stakeholders could be anybody, wife, बच्चे, society at large, anyone and anybody who interacts with me. ठीक है? Before we start, why right thinking is very important, let me share with this. ठीक है? Suppose I am your friend. Hypothetically, I am your friend and I am not feeling good for some reason. And that reason is I came to know that my dad is not keeping well. He has been hospitalized, and the doctors have given a 48 hours of observation time. The parameters are not okay, although they are doing their best, but they say we will observe and then we'll be able to tell Girish how he is going to be after 2 days. So now Girish is thinking about my dad, and because my father is not keeping well, I am not feeling okay. I am little, मैं थोड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ, स्ट्रेस में हूँ, चिंता में हूँ, क्या होगा पता नहीं. And you barge into me and you say, गिरीश अरे क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठा है, तेरा मूड क्यों खराब है? And you as a wonderful dear friend try to change my mood. Yeah, you do it. आपके जीवन में कई बार आपके भी कई लोगों ने मूड चेंज किया होगा, आपने भी बहुतों का मूड चेंज किया होगा. यस और नो? Oh, fantastic. So as a good friend, you try to change Girish's mood. How would you do that? Pardon? You will console me. Okay, fine. What else? Sister Bulia? Okay, you'll keep listening. I'm already crying inside and I want to cry loudly so that someone listens to me और अपना मन हल्का हो जाए. Typical women answer. हाँ. मतलब रोना तुम भी रो, मुझे भी रुलाओ. With due respect, sister. Yeah. Pardon? How? Do it. Oh, this is interesting. What's your name, sister? पूनम. पूनम सिस्टर के लिए जोर से ताली बजाए. अच्छा, जोर से. बहुत अच्छा. बीच बीच में मैं ताली बजाऊंगा जिसकी वजह से आजू बाजू वाले जग भी जाएंगे, ठीक है ना? इसीलिए बजाते रहिएगा. She said she will distract my thought process so that I'm not thinking about my dad, because thinking about the dad was causing me all the negative feelings. So maybe if you come to know that I'm interested in sports, तो आप उस दिशा में बात करोगे. अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला, पहला तो हम जीत गए, मजा आया. वी टुक एन रिवेंज आल्सो ऑफ द लास्ट T20 वर्ल्ड कप. CWG में भी हम लोग ने इतने अच्छे मेडल्स जीते.
oh, we look forward to the next India Park match, there is a very high probability that temporarily मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा. मूड क्यों अच्छा हुआ? मूड क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि मैं पापा के बारे में सोच रहा था, तो मैं थोड़ा एजिटेटेड था. जैसे ही क्रिकेट, इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम के बारे में शी गेव मी द इनपुट, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा. यस या आजकल लोगों की भी जरूरत नहीं है दोस्तों. नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यूट्यूब ही सब काम कर लेता है. आई डोंट नीड एनी अदर पर्सन टू चेंज माई थॉट प्रोसेसेस. मोबाइल फोन वुड ऑल्सो डू. इट्स सो अनफॉर्चुनेट. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मूड और फीलिंग का बेसिस क्या है? हाँ, जोर से बोलिए. थॉट. जैसा सोचेंगे वैसा ही करस्पॉन्डिंग फीलिंग, इमोशंस या मूड हमारा बनेगा. और जीवन का एक उद्देश्य हमारा ये होता है कि आई वॉन्ट टू फील गुड, पीसफुल, करेजियस, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, प्लेजेंट. यही तो हम सब चाहते हैं ना. यस और नो? और इन सब फीलिंग का बेसिस क्या है? थॉट्स. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. गिरीश का ही थॉट्स क्यों नहीं चेंज कर पाया? और फॉर दैट मैटर गिरीश का मूड क्यों नहीं चेंज कर सकता है? वाई डू आई नीड अ नेटफ्लिक्स? वाई डू आई नीड अ फ्रेंड? वाई डू आई नीड समवन एल्स? हम खुद अपने मूड को क्यों नहीं चेंज कर पाते? सेल्फ रिलायंट क्यों नहीं है? वाई एम आई डिपेंडेंट ऑन समथिंग, समबडी? ब्रदर, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस थिंकर. राइट थिंकिंग के लिए प्रीरिक्विजिट क्राइटेरिया है, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग फर्स्ट. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. और क्यों नहीं हम सोच पाते हैं? मूड हम क्यों नहीं चेंज कर पाते? क्योंकि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट नो. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन मेडिकली, आई मीन yesterday I was doing a program for brother, you want to share? Yeah, absolutely. So where the way you are thinking, you are creating that kind of an energy and you are dissipating that energy also. So yeah, sister, please, go ahead. I just can't hear you, sister. Okay, fantastic. ये अच्छा है. The person knows me better than I know myself, तो वो मेरा मूड चेंज कर सकते हैं और हम अपना मूड नहीं चेंज कर पा रहे. महान है. पांव बाहर निकालेंगे तो चरण छू लेता हूं. ठीक है ना? अब यही तो प्रॉब्लम है. I want somebody else to know me better than I know myself. I mean, that's, I mean, dependency फिर बाहर ही हो जाता है. Question: क्या आपका हाथ आपका सुनता है हमेशा? Does your hand always listen to you? So I want to have a sip of water. I just thought, और मेरा हाथ तुरंत पानी के बोतल पे चला गया. ऐसा कभी हुआ कि आपको पानी पीने का मन कर रहा है और आपका हाथ कहता है जाओ आज स्ट्राइक पर हूं? I'll not work. You think whatever you want. I will just not function. Has it ever happened? No. Does your leg always listen to you? Yes. Under only one medical condition it will not listen, and that is paralysis. So I was stroke, right side paralytic. How much you wish your intention strong, you think strong, your hand will not move because there is a problem. The electrical brain is not giving the inputs and the hand is not getting the message. Yes? एक ही कंडीशन में आपका हाथ पांव नहीं सुनेगा, वो है पैरालिसिस. क्वेश्चन: क्या मेरा मन मेरा हमेशा सुनता है? हमेशा, ऑलवेज. अच्छा, ये पीछे वाले थोड़े डेंजरस हैं. बस इतना ही मुझे समझ में आया. ठीक है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज. तो मेरा हाथ मेरा हमेशा सुनता है नॉर्मल कंडीशन में, मेरा पांव मेरा हमेशा सुनता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन मेरा मन नहीं सुनता. इसका मतलब पैरालिसिस है. हाँ या ना? और उसको मैं एक हिंदी फिल्मी लैंग्वेज में अगर गीत के माध्यम से बोलूं, आधा मैं बताऊंगा, आधा आप फिल करना. ठीक है? दिल है. क्या बात है जी, क्यों नहीं मानता?
आपका मन नहीं मानता, आपका हाथ मानता है, पांव मानता है, फिर दिल या मन क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारा प्रायोरिटी में, एजेंडा में मन था ही नहीं, बचपन से नहीं किया ये. We have never consciously thought of what I'm thinking and whether it is bad, poor, negative. And when I understand the importance, then I look at the right thinking. ठीक है? तो right thinking के लिए क्या करना है? बहुत simple है दोस्तों. I hope you can see that. Right thinking is to think about things that are true. Good, bad comes later. True reality. Brother, please. बोलिए, जोर से बोलिए. अच्छा, मन इज ब्रेन और मन इज हार्ट. इट इज नीदर. इफ आई आस्क यू द सॉफ्टवेयर लैंग्वेज इज द हार्ड डिस्क और द मॉनिटर, इट इज अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर टैंजिबल नहीं है. हार्ट और आपका ब्रेन टैंजिबल है. एक व्यक्ति के मरने के बाद भी उसको हार्ट है, उसका ब्रेन है, लेकिन थॉट्स नहीं है. सो थॉट्स, आज मॉर्निंग क्लास आपने अटेंड किया हो, इज द क्रिएशन ऑफ द सोल. सोल का एक एबिलिटी है टू थिंक. ठीक है? मन सोचता है, हार्ट पंप करता है. पोएटिक या लिटरल लैंग्वेज में मन को दिल के साथ जोड़ दिया है. बट ऐसा दिल को आप आर्टिफिशियली भी रन कर सकते हो हार्ट लंग मशीन में. ठीक है ना? बट ब्रेन डेड व्यक्ति इज डेड. हार्ट स्टॉप कर सकते हो आप. यू कैन डू अ ओपन हार्ट सर्जरी एंड पुट द एंटायर प्रोसेस इन अ हार्ट लंग मशीन. ठीक है? सो मन क्या है? मन मुझ आत्मा की सोचने की शक्ति है. वो सही सोच सकता है, गलत सोच सकता है. सही सोचेंगे तो सही इमोशंस जनरेट होंगे, गलत सोचेंगे तो फिर गलत मूड, गलत फीलिंग्स आ जाएंगे. और मूड से डिटरमाइन होता है आपके एक्शंस. आपका मूड खराब है तो आप शायद किसी पे गुस्सा भी कर दो आउट ऑफ इरिटेशन. अब गुस्सा करके आपका रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाएगा एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन हैपन ओवर देयर. देन इफ यू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट बिकम्स योर हैबिट. हैबिट से एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड से फिर आपकी पर्सनालिटी हो जाएंगे. और फिर आप लोग बोलोगे गिरीश है ना, हमेशा रोता रहता है, हमेशा दुखी. सर्टिफाई कर दिया आपने मुझे. नाउ पीपल आइडेंटिफाई मी बाय माय पर्सनालिटी. एंड वो पर्सनालिटी कैसे बना? उसका जेनेसिस कहां से था? थॉट्स. और थॉट्स पर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं है? बहुत सिंपल है. बचपन से लेकर अभी तक माता पिता, समाज, सोसाइटी, टीचर्स, एल्डर्स, रिलीजन, बुक्स, पीयर्स, मीडिया, इंटरनेट, everybody focused only on one thing, and that is the third one, that is the behavior. Thoughts, moods and behavior. बचपन में मेरे घर में मेहमान आए, मैं छोटा था, थोड़ा लेट आए, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू रिसीव देम. जैसे ही वो घर में आए, मैंने उनको बोला तुम लोग इतना लेट क्यों आए? मिला एक जोर से चाटा. और पता है मम्मी ने क्या कहा? तुम नहीं बोलते बड़ों को, आप बोलो. ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं खाते, ऐसा नहीं पहनते, ऐसा नहीं बैठते, ऐसा नहीं पढ़ते. सब कर्म में हम लोगों को गाइडेंस दिया. नो मम्मी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मदर्स ऑन प्लैनेट अर्थ, नो मदर टोल्ड दिस गिरीश कि बेटा ऐसा नहीं सोचते. और प्रॉब्लम पता है क्या? हम चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, कर्म में नहीं हो पा रहा है. आई हैव एन इंटेंशन. व्हाई? बिकॉज एक्शंस आर बेस्ड ऑन योर thoughts. And the beauty of Brahma Kumaris, or the purpose of meditation, meditation means meditary. Meditary means to think, to ponder, to create, to generate thoughts, thoughts which are righteous. Righteous means which is very true. वो true अगर ट्रू है तो ऑटोमेटिकली बेनोवेलेंट हो जाएगा, गुड हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा फॉर द सेल्फ, फॉर द अदर्स, फॉर एवरी and any stakeholders on planet earth. So the first understanding is, Brahma Kumaris में हम truth की बात करते हैं. Please don't get impressed by Girish bhai. I'm just like you. So you have to question what Girish bhai is speaking, not get impressed by who is the speaker or what style is he adopting. I may be very hilarious, I may be very appealing, but that's not important, friends. What is important is the content. एंड कंटेंट अगर गिरीश भाई सत्य कह रहा है तो उसको स्वीकार करना. और दुख की बात यह है कि संसार में जितने लोग हैं उतने सत्य हैं, और वही हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना?
So right thinking requires self-awareness of personal biases and fears. बहुत गड़बड़ है. कहां गड़बड़ है? थिंकिंग पैटर्न में ही गड़बड़ है. एंड आई थिंक व्हाट आई एम थिंकिंग इज राइट. तुमको जो लगता है तुम करो ना. सो हस्बैंड एंड वाइफ, देयर आर टू राइट. बिल्कुल सत्य है, तभी लाइट जाता है. आई थिंक somebody is controlling here. Both are right, but the घर का कंडीशन इज बैड. ये है आउटकम. एंड दोनों जाकर साइकोलॉजिस्ट को बोलते ये गलत, वो बोलती है ये गलत. साइकोलॉजिस्ट बेचारा वहां पर भी परेशान. हाउ कैन यू क्रिएट अ बैड बाय बीइंग टू गुड? टू गुड शुड मेक 2+. यस और नो? अब यही प्रॉब्लम है, उसको हम we will just check on to it. It requires being fully present and objective. You have to be very conscious of what you're thinking. Evaluate. And that's what introspection is all about, and we will do it. So what is mind? I'll give you one definition of mind. वैसे तो there could be many dimensions to it. So as a noun, this mind can be a beautiful servant, provided you are the leader. आप मालिक हैं, तो ये जो सर्वेंट बनकर आपके आदेशों का पालन करेगा. अगर ये नहीं हो पाया तो दोस्तों इट कैन बी अ डेंजरस मास्टर. राइट थिंकिंग इसीलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज माई माइंड हैज टर्न टू अ डेंजरस मास्टर. इट इज गिविंग मी कमांड्स एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट. गुलाम कौन होता है? जो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है. जो मालिक बोलता बैठ तो बैठ गए. So my mind is dictating terms because my dad is not keeping well and I have no other choice but to think negative, feel negative, behave negative, create a negative personality. And I say I have no control. मैं क्या करूं? दिल है. आप लोग गाना अच्छा नहीं गाते हैं. So the understanding is meditation और लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रूल योर माइंड और एल्स इट विल रूल यू. ठीक है. लास्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइंड. व्हेन द माइंड इज वीक, अ स्मॉल सिचुएशन, अ रियलिटी विच इज एक्सटर्नल, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और पता कहां से शुरुआत होता है? वो हाउसमेड नहीं आई तब से शुरुआत होता है. मेरा बच्चा उठता नहीं है, यहां से लेकर इट कैन बी मदर सफरिंग फ्रॉम कैंसर. एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम. एंड द माइंड इज जस्ट नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट सर्टेन ट्रिवियल हैपनिंग्स एट होम. इतना छोटी सी बात है. और अगर हम किसी फ्रेंड के पास जाएंगे ना, वो बोलती क्यों इतना अब तुम परेशान हो रही, इतनी छोटी सी तो बात, तेरे को लग रहा होगा और जो मुझे लग रहा है इज राइट. और हम फ्रेंड को भी इग्नोर कर जाते हैं. यस और नो? So when the mind is weak, every situation will turn into a problem. When the mind is balanced, थोड़ा सा powerful है, the same situation can become challenging. You feel like I should take up this challenge and come out victorious. People who accept challenges, there are very high probability that they will turn out to be very, very famous personalities because they take the problem head on. They are more powerful than the problem. Why? Because the mind is little balanced. And the third and the last one, when the mind is strong, powerful, empowered, the same situation can become an opportunity. So life is an opportunity, friends. To think right, to feel good, to do good. But that's not what is happening. And at times, I am so frustrated with the same life that I can go to an extreme situation of even committing suicide. I just can't take it. Or one step ahead, I can get into depression, anxiety. I can feel overwhelmed. And it's not the situation, friends. It's you. So let's try it. It's all a mind game, to be very honest. And I think you are at the right place because we'll focus primarily on this mind game. So as we were discussing, what we think drives our emotion. So there is a situation, an event, my dad was not keeping well. I was creating a similar, just as a sister, I was thinking a similar kind of thoughts. क्या होगा, कैसे होगा, पापा अगर कुछ हो गया फिर मेरा क्या होगा,
he was the only one whom I loved the most. I'm creating that kind of thoughts, similar emotions and feelings I'll generate, right? Right thinking में एक problem जो आता है, what psychologists have identified, it's called as thinking trap. हिंदी भाषा में उसको कहते हैं मुझे लग रहा है. और ये जो लग रहा है ना, यही सबसे बड़ा ट्रैप है. मुझे लगता है. If time permits, I'll share all the 12 thinking traps. I want you to relate it to your life and see whether I am also thinking out of this thinking trap. In psychology, thinking trap is called as cognitive distortion. Cognition is the ability to think, और उसमें distortion अगर आ गया है, और ये क्या है? Cognitive distortions are the ways that our mind convinces us of one thing when in reality is completely false. है ही नहीं वो, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट है. और ये जो लगता है ना, इसी को हम सत्य मान लिए. We don't even examine the evidence. We have no proof. अब लग रहा है ना. Yes or no? These inaccurate thoughts are usually used to reinforce negative thinking patterns, telling ourselves things that sounds rational and truthful in the moment, but only serve to trigger feelings of negativity and pessimism. उसका outcome 100% negativity and pessimistic ही होगा. लेकिन मुझे लग रहा है वो सत्य है, and I don't even realize it. We may suffer from one of the many thinking traps that can hijack our brain, emotions, personality, behavior. हर चीज को impact करेगा, friends. Please check whether I am a part of any of those thinking traps. In 1976, psychologist called Aaron Beck first proposed this theory behind cognitive distortion. 1980s में there was one more psychologist called as David Burns. He was responsible in popularizing it and making it very simple and relevant to common people, which I'll discuss with you. ठीक है? So what we need to do? Outcome, I need to introspect. You can overcome these thinking traps by learning to notice. खुद में भी नोटिस करिए, घर परिवार बच्चे टीम मेंबर्स में भी नोटिस करिए. जस्ट स्टेटमेंट्स, कोई स्टेटमेंट वो कह रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, ही और शी इज स्पीकिंग फ्रॉम दैट थिंकिंग ट्रैप, एंड यू हैव टू एक्नॉलेज इट and slowly refute it. No, let me check those negative thinking patterns. और इसको अगर हम बार बार करेंगे, as you continue to dispute it, no, this is just out of some thinking trap, let me evaluate, examine the relevant evidences, and then I will take a decision out of it. Based on the right decision, I'll feel the right way. And ये बार बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो slowly आप पाएंगे कि it will keep diminishing and you will come on the right track of right thinking is concerned. So what are the steps you need to take? Number one, acknowledge that difficult things happen in life. Papa keeping not well, it's not under my control. It will happen. Challenges will come to, grace me, but then I have an ability to think right or bad. Identify your thinking traps. That's what introspection is all about. We will do. Play devil's advocate with yourself. क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ? क्यों दुखी फील कर रहा हूँ? क्यों मेरे को उनके बारे में नेगेटिव आ रहा है? क्यों बार बार आ रहा है? Please question yourself. Talk to yourself as if you're your dear friend. जैसे आप मुझसे मेरे को कॉन्फिडेंस में लेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, पापा ठीक हो जाएंगे, सब ऐसे ही अपने आप से भी बात करना है. Stay stop when worry ridden thoughts take over. The next session is all about how to stop overthinking. It will help you, friends. Practice self-care as much as possible. My dear friend, definition of my dear friend is एक कॉल पर वो हाजिर हो जाता है, सब काम छोड़कर आ जाता है. वो मेरा फ्रेंड मेरे लिए जान लुटाने के लिए तैयार. ही इज ऑलवेज देयर, सुनता है मेरी. प्रश्न, आपका मन आपका डियर फ्रेंड है? अरे चाहता हूं कि मेरा मन ऐसा सोचे और वो नहीं सोचा, सुन नहीं रहा मेरा मन. एंड आई एम लुकिंग आउट फॉर द right person in my life to add value to me. There is such a beautiful energy within you which is not my dear friend. मेरा मन मेरा नहीं सुन रहा है, मेरा फ्रेंड मेरा सुन लेता है, सब छोड़ करके वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है. ऐसे ही है ना फ्रेंड? But can I make my mind my dear friend? The first one,
दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, इट्स कॉल्ड एज जंपिंग टू कंक्लूजन। और अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करूं, इंक्लूडिंग गिरीश, हम सब इसके विक्टिम हैं। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं माइंड रीडिंग। और पता है माइंड रीडिंग क्या है? दिस इज अ ट्रैप दैट हैपेंस व्हेन वी बिलीव दैट वी नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग एंड अज्यूम दैट दे आर थिंकिंग द वर्स्ट ऑफ अस। मैंने आपको ओम शांति कहा, यू डिडंट रिप्लाई, देखा ये मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। हु टोल्ड यू वो पसंद नहीं करते हैं? डिड यू चेक द एविडेंस? अरे वो किसी और बारे में सोच रहे होंगे, उन्होंने आपका ओम शांति को रजिस्टर ही नहीं किया, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही और शी डिड नॉट रिप्लाई बैक। लेकिन मुझे पता है ना। अच्छा, तुमको कैसे पता? लग रहा है ना। अब ये लग रहा है इज एवरीथिंग। हेलो, व्हाट यू लग रहा है, इज इट द रियलिटी? कैन यू हैव द गट्स गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन व्हेन ही और शी इज फ्री? आपने मेरा ओम शांति का जवाब नहीं दिया दीदी, क्यों? आई मे बी लेटर से, हाँ मेरे को तू पसंद नहीं है, तब आप बोलो हाँ। और माइंड रीडिंग में हम सब ज्योतिष विद्या में एक्सपर्ट है। मुझे पता है, मुझे लग रहा है, आई नो, आई फील, यस और नो। द रियलिटी इज, सत्य मैं बताता हूं, विद 25 years ऑफ मेडिटेशन, आई डोंट नो पुराने जमाने में लोग कर पाते नहीं कर पाते, आई स्टिल डोंट नो। द रियलिटी इज नो वन कैन रीड माइंड्स, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। और इफ समवन कैन रीड योर माइंड्स, ही विल बी द मोस्ट डिप्रेस्ड। उसको अगर एबिलिटी भी मिल जाए, बोले रहने दो भाई, मेरे को नहीं जानना तुम्हारे मन में क्या चला। और इतने लोगों का, मैं अपना नहीं संभाल पा रहा हूं, मैं और 4 लोगों का संभाल लूं। Maybe that's the reason why nature did not gift you that. We can never really know what others are thinking. Example, I know they hate me. मुझे पता है my mother-in-law कितना किया सर उनके लिए, लेकिन मुझे सब पता है वो मुझसे प्यार नहीं करती। तो रो के क्यों बोल रहे हो? मुस्कुरा के बोलिए ना। मुझे पता है मेरी सासू माँ मुझे प्यार नहीं करती। लाइफ इज ब्यूटीफुल। I mean, what's the big deal? How? I mean, look at your state. What is your life? I know they hate me. They're all making fun of me behind my back. You know, I visit my friend and he refused to meet me. और वो अपने कमरे में चला गया, लॉक कर दिया, बोला मेरे को तेरे से मिलना नहीं है। I feel he is avoiding me. बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, एक एक वर्ड। I feel he is avoiding me. कैसे पता? Maybe he is really sick, he doesn't want to meet. Maybe वो उस कंडीशन में वो आपके साथ मिलना नहीं चाहता, उसका फिजिकल अपीयरेंस जैसा हो। और मे बी वो नहीं चाहता है कि वो आपके प्रेजेंस, आप भी उसके नजदीक में, कंटेजियस हो सकता है, आपको भी बीमारी हो जाएगा। वो बोल रहा है यार मैं कल मिलता हूं, और मैं पता है उसका कंक्लूजन क्या रहा, आई फील ही इज अवॉइडिंग मी। खेल खत्म है दोस्तों। कितना भी मेडिटेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन। वो दीदी आपको मेडिटेशन करा रही थी, मैं आत्मा बहुत शांत, आई नो ही इज अवॉइडिंग मी। दीदी करा रही थी, भगवान मेरा साथी है, मैं कर रहा हूं, मेरा साथी मुझे अवॉइड कर रहा है। क्या है मेडिटेशन? इट्स क्रिएटिंग पॉजिटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ, अबाउट अदर्स, बिकॉज एज यू थिंक, रिजल्ट क्या होगा? थॉट्स का रिजल्ट क्या है? मूड। और मूड से फिर आपका एक्शंस। यही तो हम चाहते हैं ना। ही और शी इज बोर्ड ऑफ हैंगिंग आउट विथ मी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों। नंबर 2, चेक किया जंपिंग टू कंक्लूजन, माइंड रीडिंग। चलो हम हमेशा नहीं करते, कभी कभी तो करते हैं, और जो हमसे सबसे क्लोज्ड वंस होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत करते हैं। नंबर 2, विच इज कॉल्ड एज फॉर्च्यून टेलिंग। ज्योतिष विद्या में हम एक्सपर्ट है फ्रेंड्स। यू नो what do you mean by fortune telling? Like mind reading, fortune telling occurs when we predict that things will turn out bad. घर से निकले नहीं, वाइफ हस्बैंड को कहती है मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है। आज तक इस संसार में कोई पत्नी ने, कोई हस्बैंड को नहीं कहा आज लग रहा है कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा तो कभी लगता ही नहीं है। और भगवान ना करे कुछ ऊपर नीचे हो गया, ओला वाला टाइम पर नहीं आया है, 2020 हमने खेला और 2 मिनट पहले हम ट्रेन में चढ़ पाए या फ्लाइट पकड़ पाए, तो पता है वाइफ क्या कहती है? देखा, मैं पहले से ही बोल रही थी कुछ गड़बड़ होने वाला है, और तुम तो सुनते नहीं हो, मेरी तो मानते नहीं हो।
तुम्हारी वजह से आज फ्लाइट मिस हो जाता। बेचारा हस्बैंड, एक तो इनका लगना भी करेक्ट, और अनफॉर्चुनेटली इनका जो लगना है वो सत्य भी हो गया। अच्छा प्लीज बताइए, जिस दिन आपको नहीं लग रहा था उस दिन कभी गड़बड़ नहीं हुआ? हेलो हेलो, नॉट नेसेसरी। एंड हमारी वाइफ्स बहुत एक्सपर्ट होती हैं, शी डजंट वांट टू बी अ पार्टी टू ऑल व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं तो सुबह ही से कह रही थी कुछ गड़बड़ होने वाला, तुमको ही नहीं समझ में आ रहा था। We wash off our hands of all the responsibility of what went wrong. You are wholly responsible because I told you, I had that gut feeling. We predict that things will turn out bad. When we believe the future is already set in stone and negative, we resort to fortune telling. पापा इस बार एग्जाम में मैं फेल होने वाला हूं, प्लीज कैच। मम्मी ने नहीं सिखाया, तुम क्या सोच रहे हो, वहां पे पकड़िए। अपने यंग जनरेशन को ये सब सिखाना बहुत जरूरी। आई फील आज कुछ गलत होने वाला, अरे क्यों फील कर रहे हो, चेक। मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, these are techniques. Meditation, these are techniques wherein you can come out of these trap. I just know papa I'm going to fail my exams. क्यों भाई? You have a meeting with a wonderful person but you predict that meeting will go bad. क्यों? And ऐसा ही होता है। और फिर मैं आके पोस्ट मीटिंग अपने कलीग को कहता, देखा मुझे सुबह से लग रहा था गड़बड़ होने वाला, वैसे ही हुआ। आपके साथ हुआ है कभी ऐसे? हाँ या ना? अच्छा, यू आर एक्सपर्ट्स। नंबर 2, this is wonderful friends, this generally happens with type A personalities जो बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म पर बिलीव करते हैं। उनमें पोलराइज थिंकिंग होना जरूरी है। पोलराइज थिंकिंग मीन्स ब्लैक और व्हाइट, दे थिंक इन एक्सट्रीम्स। एनीथिंग एज पर माई परफेक्ट एक्सपेक्टेशन अगर हुआ है तो मैं सक्सेसफुल है, अगर वो परफेक्शन से नहीं हुआ मतलब फेल है। There is no in between, either it is black or white. So suppose I have a academic career है जिसमें always I have scored 90 and above, 90 and above, 90 and above, बचपन से। 12th स्टैंडर्ड में आकर मुझे 89 मार्क्स मिलते, 89% मिलते हैं, और ये बच्चा रो रहा है। अरे तो वो 33 वाला क्या करेगा बेचारा? So for this boy or a child, 90 and above is success, 90 and less is a failure. And I am crying because my understanding, because I am polarized. Anything less than 90, I am a failure. इसको कहते हैं extremist thinking. This trap occurs when we only look at situation in terms of one extreme or the other. A situation is either good or bad, success or failure. There is no middle ground, friends. And if you fall short of your expectation, you view yourself as a total failure. But in reality, most situations are somewhere in the middle. Suppose I am on very high, strict vegetarian, naturopathy वाला diet, और मैं आपके साथ एक पार्टी में आया, आउटिंग में आया, और आपने मेरे को जबरदस्ती इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये करके, वो करके एक चॉकलेट पीस खिला दिया। 6 महीने से कर रही थी, सब पानी में। अरे एक पीस ऑफ चॉकलेट विल नॉट मेक एनीथिंग रॉन्ग। 2 दिन नहीं खाना खा लो ना। जो आप काकड़ी टमाटर खा रहे थे वो नहीं खाओ, हो गया ना कंपेंसेट। बट you know, you create so much of overwhelming thoughts here. You feel so miserable. You know why? Perfect means 0.001 कमी नहीं हो सकता. There is no middle ground. इधर या इधर, आर या पार. I plan to eat only healthy food, but I ate a piece of chocolate. Now my diet is ruined forever. A student who gets an A+ always, थोड़ा भी कम मार्क्स मिलता है वो कहता है मम्मी मैं फेलियर हूं. थर्ड, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स. दिस इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग. कोविड created an environment wherein people were overwhelmed and they had catastrophic thinking. क्योंकि किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है. This trap involves imagining that the worst possible thing is about to happen and predicting that you won't be able to cope with it. When in reality, the worst case scenario usually never happens. And even if it did, you will be able to handle it. छोटी सी बात को हम इतना मैग्निफाई कर देते हैं.
बचपन में मम्मी पापा ने आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि बेटा नहीं पढ़ रहा था, पापा ने आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन बच्चे को कहा इस बार तू पास नहीं हुआ ना तो तेरे को मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा, तब तेरे को अक्ल आएगी। अब ये बच्चे ने धक्के मार के घर से, आई विल बी डिसोन्ड बाय माय पेरेंट्स, I'll be thrown out of my house. Now this is very overwhelming. Now I'm not able to concentrate on my studies. It's not because of failing the exam. It's because I'll be disowned. फिर मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, फिर मेरी शादी कैसे होगी? हेलो भैया 10वीं पढ़ ले, अब तेरे को कहां का, आप समझ रहे हैं? छोटी सी एक नेगेटिव हैपनिंग को यू मेक द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। दिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीफाइंग और दूसरा होता है मिनिमाइजिंग। सो मैग्नीफाइंग ऑकर्स व्हेन यू एग्जैजरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंट इवेंट और द पॉसिबल आउटकम्स। माता पिता, बच्चे को सब हो गया, गड़बड़ हो गया, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मम्मी पापा बोलते बेटा पास हो जा, बस मत पढ़, इतना स्ट्रेस मत ले, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी है, एग्जाम के पहले ही उसको लूज मोशन शुरू, एग्जाम के पहले ही उसको राइट हैंड में पेन है। दे आर ऑल रियल केसेस फ्रेंड। नाउ द पेरेंट्स आर सो डिस्टर्ब, दे से जस्ट गो राइट द एग्जाम एंड व्हाट एवर मार्क्स बेबी इट्स ओके, वी डोंट वांट 90% मार्क्स, वी डोंट इवन वांट यू टू पास, जस्ट जाके लिख के तो आ जा। आपको क्या लगता है आप बोलेंगे और वो मान जाएगा? ये इतना जल्दी सब स्वीकार कर लेगा? बचपन से लेकर अभी तक हर चीज को मैग्नीफाई करने की आदत हो चुकी है। मिनिमाइजिंग ऑकर्स व्हेन यू इनकरेक्टली श्रिंक द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। 5th स्टैंडर्ड में मैं 100 मीटर रेस में फर्स्ट प्राइज मिला, गोल्ड मेडल। घर वालों ने कहा वेरी गुड, टीचर्स ने कहा वेरी गुड, फ्रेंड्स ने कहा वी शुड सेलिब्रेट। पता मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये कोई बड़ी बात है क्या? भारत में पता है कितने स्कूल हैं? लाखों स्कूल हैं, और लाखों स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, मतलब लाखों बच्चे 100 मीटर जीतते हैं। आई एम वन ऑफ देम। व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट इट? ग्रेट तब होगा जब तू ओलंपिक्स में जीतेगा। हेलो भैया, कैन यू बी प्राउड ऑफ द लिटिल अचीवमेंट व्हाट यू हैव अचीव्ड राइट? कैन यू स्पीक टू योरसेल्फ वेरी पॉजिटिवली? लिटिल गुड थिंग्स दैट आई डू ऑल्सो, उसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। एंड वी आर ऑल एक्सपर्ट इन दिस फ्रेंड्स। राजयोगम मेडिटेशन टीचर्स अस द राइट, ना आपको मिनिमाइज करना है ना आपको मैग्नीफाइज करना है, ट्रुथ को ट्रुथ के हिसाब से देखिए। नाउ यू हैव अ चॉइस टू थिंक राइट, फील राइट, डू राइट एंड लिव राइट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ राइट थिंकिंग। ओवर जनरलाइजेशन, एक घटना को लेकर जिंदगी के हर चीज को मैं सर्टिफाई कर देता हूं। आई हैव अ फेल्ड मैरिज फ्रेंड्स, डिड नॉट go good. After 3 years of hard struggle, we are separated. Now husband Girish has a fear. I am not good in maintaining relationship. I am a failure. I'm not smart. I can't understand people. किसने कहा भाई? क्योंकि मैं बचपन में एक बार फेल, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू वेंट बैड, पापा मेरा हर इंटरव्यू खराब होने वाला है। अच्छा क्यों? लग रहा है ना। अब ये लग रहा ही तो प्रॉब्लम है। कैन यू इवैल्यूएट इट, इंट्रोस्पेक्ट एंड चेक ऑन द बेसिस ऑफ द राइट थिंकिंग फ्रेंड्स। ओवर जनरलाइजेशन थिंकिंग occurs when a person focuses on single event that occurred and makes a conclusion based on this single piece of negative evidence and incorrectly conclude all similar events going forward in the same way. अच्छा नहीं होगा, मुझे पता है। आप क्यों जनरलाइज कर रहे हो? बेटा एक बार फेल हुए ना, नेक्स्ट टाइम आई स्टडी हार्ड। क्यों फेल हुआ? मैंने इवैल्यूएट किया, आई डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट मच, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम यू विल बी एबल टू, मे बी द नेक्स्ट रिलेशनशिप यू कैन रियली फाइंड अ वेरी वंडरफुल पर्सन। लेबलिंग, मैं हाथ जोड़ता हूं फ्रेंड्स, दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज वेरी वेरी पेनफुल। And people who have a disorder of labeling, there is a very high chances of them getting into depression, anxiety, and a lot of mental challenges. Labeling is a cognitive distortion in which people reduce themselves or other people with usually negative characteristics. स्कूल में टीचर पता है बच्चे को क्या बोलते हैं? वो लेट आया, होमवर्क नहीं किया, यू आर स्टूपिड। लेट मी टेल यू 2 statements. I failed in the entrance exam of engineering versus I am a failure.
The second statement is from labeling. किसने कहा आप फेलियर हो? आप एग्जाम में नहीं पास हो पाए ना, that's a fact. But then labeling yourself or somebody else that you are a failure, you are stupid, तुम नालायक हो, you are good for nothing, ये हमारा ना बहुत कैजुअली निकल जाता है घर में, ऑफिस में, रिलेशनशिप में, ठक. एंड अगर सामने वाला बच्चा, परिवार वाले, ऑफिस वाले, कलीग अगर सेंसिटिव हैं और उन्होंने वो अंदर ले लिया, and if the person is under this trap and thinks that I am good for nothing, believe me friends, nobody can save this person. We have to be very very very, क्या कहूँगा, we have to think before we speak. और हम अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए भी करते हैं. बिकॉज माई मैरिज वेंट बैड, और पता है, देन द वाइफ क्रिएट्स, ऑल मेन आर बैड, ओ सॉरी, ऑल हस्बैंड्स आर बैड, सॉरी गलती होगी. आपको किसने फंडामेंटल, योर एक्सपीरियंस फाइन, बट हु हैज गिवन यू द राइट? पॉलिटिशियंस आर लाइक दिस, खुद को भी नहीं छोड़ते. मैं भी ऐसा हूं, सिर्फ दुनिया वालों के लिए नहीं, फॉर एवरीबडी. एंड अगर मैं लेबलिंग का विक्टिम हूं फ्रेंड्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. आई शेयर वन एग्जाम्पल. आई वॉज इन हैदराबाद ट्राइंग टू हेल्प वन गोल्ड मेडलिस्ट, मेडिकल डॉक्टर है, पीजी के लिए प्रिपेयर कर रही है. आफ्टर 15 days of interaction I came to know what was the problem. And you know what was the problem? I am not good. मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था why is she so frustrated. Sixth is personalization. This generally happens for women. Personalization is when I think that taking things personally when they are not connected to you or caused by you at all. मेरा बॉस का मूड खराब है, पता है, पर्सनलाइजेशन. मैंने क्या गलती कर दी जो बॉस का मूड खराब है? अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है. यू आर नथिंग टू डू विथ योर बॉस. जो भी कुछ इधर उधर गड़बड़ हो रहा ना, इट्स बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ मी. इट हैज नथिंग टू डू विथ यू, बट द माइंड प्लेज ट्रिक्स. मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से. माई डॉटर फेल्ड इन द एग्जाम्स, पता है, मदर का गिल्ट फीलिंग, मेरी वजह से, मैंने ध्यान नहीं दिया. प्लीज चेक द एविडेंस. हो सकता है एग्जाम बहुत टफ आया हो, आपने उसको टाइम जितना भी दिया, दैट वाज गुड इनफ फॉर हर टू पास द एग्जाम, बट शी डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट. Maybe she forgot everything while writing the exam. There could be plenty of reasons. Why are you taking it so personally? मैं बहुत अच्छा हूं, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, ये मेडिटेशन है. और हम, मेरी वजह से, कोविड में मेरे पापा की मृत्यु मेरी वजह से. अरे घर में हस्बैंड भी था, ही डिड नॉट सेकंड योर ओपिनियन. पापा को थोड़ा हेल्थ ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने कहा पापा आप काढ़ा पी लो, ठीक हो जाओगे. 2 दिन में उनका फीवर बढ़ गया, फिर RT-PCR कराया, पॉजिटिव आया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, सीधे ही वाज शिफ्टेड इन द ICU एंड देयर ही लेफ्ट बिकॉज ऑफ मी. अरे घर में और भी तो मेंबर्स थे ना, इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन. व्हाई आर यू टेकिंग इट सो पर्सनली? एंड द रीजन एंड द आउटकम ऑफ दैट पर्सनल थिंकिंग इज यू आर क्राइंग, यू आर फीलिंग बैड. उससे हम बाहर ही नहीं आ पाते. और अगर आप जाके बोलो नो वी अंडरस्टैंड, क्या तुम अंडरस्टैंड? तुम्हारे पापा जाएंगे ना तब समझ में आएगा. अब तो रो. अरे एक तो हम हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से आप ऐसे ऐसे हमको commandments there. I hope you are understanding, friends. Next, mental filtering. This is also something to do with generalization. Mental filtering में क्या होता है? Positives को आप ignore करते हो और negatives को फिर highlight करते हैं. That is the 7th one. Everyone hated my presentation. Now this is the thinking trap. पता है क्यों? सबको अच्छा लगा. एक व्यक्ति प्रोग्राम के बाद आकर कहता है गिरीश इतना अच्छा नहीं था. अरे एक को अच्छा नहीं लगा ना, और हमने कंक्लूड कर दिया माय प्रेजेंटेशन वाज बैड. यू आस्क 100 डिफरेंट पीपल, दे विल अप्रिशिएट यू. उसको इग्नोर. जिसने नेगेटिव कमेंट किया, आप अपना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपना फोटो डीपी, सबने कहा लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग ऑसम. एक ने कहा पुराना वाला ड्रेस है क्या, मूड खराब. अरे 10 लोगों ने आपको 10 अच्छे अच्छे एडजेक्टिव से वो किया, वो उस पर आपका अटेंशन ही नहीं है. एक ने कहा तो पुराना वाला ड्रेस है, कल भी इसी में फोटो खींचा, गए काम से, पूरा दिन खराब. डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स. क्लास में फर्स्ट आया, वेरी गुड बेटा. मैं थोड़ी ना फर्स्ट आया, वो तो लक से आ गया. हर चीज शेयर लक और फ्लूक. दिस इज इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स. शुड स्टेटमेंट्स. यू नो व्हाट इज शुड स्टेटमेंट? आई शुड डू दिस, आई शुड गेट अप इन द. प्लीज अंडरस्टैंड, ये शुड, what kind of a feeling it is creating? Is it pressurizing you? Is it giving you stress?
और इज इट मोटिवेटिंग यू? प्लीज चेंज करिए, शुड को प्रेफर करिए. आई शुड गेट अप टुमारो मॉर्निंग और आई शुड हैव गॉट अप टुडे मॉर्निंग. नहीं उठ पाया, तबीयत ठीक नहीं थी, आई डिड नॉट फील गुड, आई प्रेफर टू गेट अप टुमारो मॉर्निंग. मेक इट ईजी फ्रेंड्स, इतना ओवरवेल मत करिए, ठीक है? इमोशनल रीजनिंग, वॉट एवर यू फील इज राइट. अगेन फॉर लेडीज इट हैपन्स मोर. आई फील लोनली इज इक्वल टू माई हस्बैंड डजंट लव मी. हेलो. और वो बेचारा हस्बैंड आकर बोलते सर मेरी क्या गलती है ये तो बता दो. अब वाइफ फील्स आई एम लोनली, क्योंकि तुम ऑफिस घर में आकर के भी लैपटॉप पे लगे. अरे बहुत इंपॉर्टेंट काम था यार. वॉट एवर आई एम फीलिंग इज द रियलिटी. वो हमको लगता है. दीज आर ऑल ट्रैप्स फ्रेंड्स. इसको छोड़ देता हूं, कंट्रोल फैलेसीज. ठीक है, लास्ट दो मैं आपको बताता हूं, एंड दैट इज आई एम राइट. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. दिस इज इंटरेस्टिंग. जनरली फाउंड इन मेल्स, फुल ऑफ ईगो. मैं राइट हूं. आपको उदाहरण दूं, इट्स अ फनी एग्जांपल. ठीक है, आई वॉज ट्रैवलिंग इन बिहार. बिहार से मैं आसाम जा रहा था, हाईवे, बहुत ब्यूटीफुल रोड, और हम लेफ्ट से जा रहे थे. एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री का ट्रैफिक सेंस इज वेरी वेरी वंडरफुल. मतलब व्यक्ति ऊपर से आना बचा हुआ है, बाकी कहीं से भी आ सकता है. दैट्स हाउ पीपल इन इंडिया ड्राइव देयर व्हीकल्स. ठीक है, ओवरटेकिंग फ्रॉम टॉप अभी तक नहीं हुआ है, बाकी लेफ्ट क्या राइट क्या उनको जो मर्जी आ जाते हैं. एंड वी आर ड्राइविंग एट अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड से, सामने से. और पता है हमारे से जो ड्राइवर भाई थे, उसने कहा अब तुम इसको दिखा के रहूंगा उल्टा. और वो जैसे लेफ्ट लेना, ये भी लेफ्ट. मैंने कहा भाई साहब एक्सीडेंट हो जाएगा. बोला वो गलत है ना, अब तो दिखाता हूं. मैंने कहा आपको जो दिखाना दिखाओ, मरूंगा मैं. बोला नहीं. एंड बिलीव मी, उसने आके गाड़ी रोका, वो उसको जाने नहीं दिया. गाड़ी से उतरा, बोला तुझे कुछ चलाना नहीं आता है क्या? अरे देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस. आई नो ही इज रॉन्ग, बट देन वेयर आर यू गेटिंग टैंगल्ड विथ? हम कभी कभी है ना दूसरों को प्रूव करने के लिए खुद भी गलत हो जाते हैं, लेकिन तेरे को तो गलत प्रूव करके ही बताऊंगा. यस और नो? इट्स sheer ego friends. and the last one is blaming. एक है पर्सनलाइजेशन, कुछ भी गलत हो रहा है वो का कारण मैं हूं, यहां पर मेरा दुख का कारण. and people who always operate out of a victim mentality. मेरा लाइफ ऐसा क्यों है पता है? हस्बैंड की वजह से. मेरा लाइफ ऐसा क्यों है पता है? वाइफ की वजह से. मेरा लाइफ ऐसा क्यों है पता है? मम्मी पापा बचपन से ऐसे थे. सॉरी फ्रेंड्स, ब्लेमिंग, दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप. ठीक है, meditation is to bring you to reality. This is not what your mind should do. You have to come to the original. Mind की characteristic nature है, उसके originality पे आप लेकर जाएंगे ना, ये सब automatically खत्म हो जाएगा. मेडिटेशन करें 2 मिनट? करें या चलिए सीधे बैठिए. आपको आंख बंद नहीं करना है. आई वॉन्ट यू टू लुक एट द स्क्रीन. ठीक है, फील इट. क्रिएट अ थीम. थीम इज ऑल पॉजिटिव थिंकिंग. खुद को विजुअलाइज करिए उस पिक्चर में विद द वर्ड्स एंड द लाइट म्यूजिक. ठीक है, विड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम ऑल व्हाट इज एक्सटर्नल. ओनली फोकस ऑन, पे अटेंशन टू व्हाट्स देयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है भाई साहब, म्यूजिक प्ले करेंगे या 1 2 3 स्टार्ट. लेट्स मेडिटेट फ्रेंड्स. Even with your eyes open, withdraw your attention from all that is there in the external world. Please focus your attention onto the screen. The next few moments, these are my personal moment. Tell your mind, oh my dear sweet mind, I have an appointment with you. Please don't go anywhere. You're not allowed to. Either in the past, future, office, just be with me. And in case your mind wanders, playfully, with a lot of love, bring your mind back. And with complete conviction, complete confidence, accept this reality.
Look at that image and see yourself in that image. Your bright, smiling face. I'm grateful for another day of my life. I'm so blessed. I'm so lucky. And today is such a wonderful day. I am playful. My body, mind, spirit is healthy. I take time to practice well-being because I prioritize my well-being. I am happy, physically healthy, always smiling. Dear friends, please feel you are healthy. You are playful. You are active. I choose myself. I am very important to myself. My mind is my dear friend. I nurture it, nourish it, empower it with the right knowledge. It listens to me. My feeling is very important. Come what may, I only choose love, peace, and happiness. Friends, feel I am very important. I believe in myself. I am full of confidence. I can achieve the impossible. I can free myself from all the cognitive distortions. I am mentally serene, peaceful, and healthy. I am kind to myself and others. I understand others' pain. I am always helpful. I am available for others' need. I love and accept myself. I may have certain challenges and weaknesses. It's okay. Life is a beautiful journey. Because I love myself, I'm able to change myself positively. Friends, please feel that love. Tell yourself, I love myself. I accept you the way you are. It's okay. If things have gone bad, things did not happen the way I wanted, but it's okay. Acceptance generates the feeling of love. I accept myself exactly as I am without any judgment. No labeling, only the right labeling. I am serene. I am a child of the Almighty. I am powerful. That's what the truth is. I trust my inner true self and follow it. My true self is free from distortions. It always creates the true thoughts, emotions, and feelings. I am love, and I am loved. God loves me. I love my family members. In turn, they also love me. Feel the love of others. I am so special. There are so many people who are there to take care of me, who are there to provide safety and security. Thank you, God. Today I am in the right place, in the right time, doing the right thing. And the right thing to do is to always think right. And I'm learning this technique. And God, you are my teacher to teach me. Who else can be a better teacher than you? Thank you so much. Friends, have a sense of gratitude to the Almighty. Feel God's presence and say, सचमुच भगवान आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे पे लगाएं, your forehead, your eyes. Feel the peace, love, your cheek, chin. Thank you so much.
फेयर एंड लवली लगा लिया सबने, सदा फेयर और सदा लवली। थैंक यू। ओम शांति। Thank you, brothers. Thank you for the very deep and very practical aspects of our life. You know, जब हम आपको सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था हमारा ही मन बोल रहा है जो आप बोल रहे हैं माइक में, ऐसा लग रहा था। यस, स्पेशली जब हम बोलते हैं मेरा मन कह रहा है ना, मतलब ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो बहुत बहुत थैंक्स ब्रदर, आपने आकर के अपना समय दिया और हमें अपने मन के बारे में बताया। और एक दो अनाउंसमेंट्स हैं, सिंपल अनाउंसमेंट है कि एक तो अभी टाइम है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वी हैव सम टाइम फॉर ब्रेक। कौन सा वाला ब्रेक करेंगे? इट्स अ टी ब्रेक, राइट? टी ब्रेक, कॉफ़ी ब्रेक वो तो होगा, लेकिन our classes continue. You like this state of being here, in the state of peace, state of being together. You like this feeling? Yes? Sabhi ko pasand aa raha hai? Okay. I want to ask one thing before I continue with the break. कि ये translation के बारे में आप में से किस किस को translation चाहिए? Anyone need? Or all of you are good with Hindi and English? Comfortable? Anyone? Even a single person? You need English? You need Hindi? You need English. How many of you follow only English? Only, no Hindi. Only English. 1, 2, 3, 4, 5. More of English, but little Hindi you can follow. Okay, so for I think 5, 6 participants, you need English translation, otherwise fine, right? सबके साथ में English अच्छा है ना? Hindi and English is English, mixed language. Okay, and the second is break time. अभी हम सभी जाएंगे और ग्राउंड फ्लोर में गार्डन है बहुत ब्यूटीफुल, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्थान बनाया है, वहाँ पर टी एंड कॉफ़ी एंड बिस्किट्स अवेलेबल फॉर यू। जाएंगे कैसे? इसी स्टेट ऑफ माइंड में, मन के बारे में सुना है ना, अपनी मस्ती में अकेले अकेले जाएं। एन्जॉय योर ओन कंपनी व्हेन यू आर हियर इन मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स। एन्जॉय योर ओन कंपनी। दिस इज़ द बेस्ट, you are the best person in the world, so you can have your own company. धीरे धीरे जाएं। हाँ, लेफ्ट साइड में, स्टॉल में नहीं जाना है, नीचे गार्डन में लेफ्ट साइड में अपोजिट में अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। योर नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट एट 11:15। उससे पहले फ्री हो जाए तो आ जाइएगा। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने अंदर भरिएगा, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और फिर बाकी हम हमारे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे 11:15 पर। धीरे धीरे जाएं।